Hey guys, Kasaka, welcome back to Code with Bahuli, and today is part 4 of knowing the basic terminologies in the essay. And today we're going to know about the algorithms. So, algorithm is a step-by-step procedure which defines a set of instructions to be executed in a certain order to get the desired output. So, algorithms are generally created independent of underlying languages. That is, an algorithm can be implemented in more than one programming language. Okay, so let's go ahead. So there are some categories of algorithms from the data structure point of view. Following are some important categories of algorithm. There are total five categories. First is search, that is algorithm to search an item in a data structure. Then is this sort, algorithm to sort items in a certain order. Insert, algorithm to insert item in a data structure. Update means algorithm to update an existing item in a data structure. And then it's delete, algorithm to delete an existing item from the data structure. Then some of the feature, clear and unambiguous. Algorithm should be clear and unambiguous. Each of its steps should be clear in all aspects and must be led to only one meaning. मतलब हमें algorithm को काफ़ी confusing नहीं बनाना है. It should be short and simple ताकि सब समझ पाए. Okay. Then well-defined inputs. If an algorithm says to take inputs, it should be well-defined inputs. यानी कि for example हमें एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करना है, जिसके लिए वी नीड टू नो द रेडियस. और रेडियस के लिए शायद हमने इंट डिफाइन किया हो, और अगर आप उसे फ्लोट में एंटर करो तो इट डजंट मेक सेंस, राइट? तो वो एक इनवैलिड इनपुट हो जाएगा. इसीलिए इट शुड बी वेल डिफाइंड इनपुट. Well defined outputs, the algorithm must clearly define what output will be yielded, and it should be well defined as well. So basically जब आप algorithm लिख रहे हो तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आउटपुट कैसा दिखना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए. आप ब्लाइंडली तो algorithm नहीं लिख सकते, राइट? सो आपके माइंड में वो क्लियर होना चाहिए. Then finiteness, the algorithm must be finite, that is it should not end up in an infinite loop or similar. मतलब एल्गोरिदम एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही एग्जिस्ट करना चाहिए. ऐसा ना हो कि वो एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा बड़ा हो और कभी एंड ही ना हो, राइट? सो एंड होना चाहिए. Feasible, the algorithm must be simple, generic and practical such that it can be executed upon will the available resources. It must not contain some future technology or anything. मतलब जो practically possible हो वही लिखना चाहिए, यानी कि 2+2 is 4 not 3, वैसे kind of. So जो possible हो वही algorithm में लिखा करो. Okay. Language independent, the algorithm design must be language independent, that is it must be just plain instructions that can be implemented in any language and yet the output will be same as expected. तो basically हमें for example sum लिखना है, like sum print करना है दो values का, तो वो एल्गोरिदम सेम होना चाहिए. मतलब वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए जो हर लैंग्वेज के लिए यूज करे, भले वो जावा हो, पाइथन हो, सी प्लस प्लस हो, वो सबके लिए एल्गोरिदम सेम ही होना चाहिए. ओके. So let us know now what are the advantages of algorithms. First, it is easy to understand. Second, algorithm is a stepwise representation of solution to a given problem. Third, in algorithm, the problem is broken down into smaller pieces or steps, hence it is easier for the programmer to convert it into an actual program. ओके. तो पहली बात इजी टू अंडरस्टैंड ऑफ कोर्स, क्योंकि हम अपना एल्गोरिदम खुद डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि सबका अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होता है, तो सब अपने हिसाब से एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं, तो अपने लिए समझना इजी होता है. और ऐसे ही जब आप लिख रहे हो कोई एल्गोरिदम, वो सामने वाले के लिए भी इजी होना चाहिए अंडरस्टैंड करने के लिए. Okay, then algorithm is a stepwise representation, of course.
कि हम उसमें स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 डिक्लेयर करो वेरिएबल्स एंड ऐसे सब स्टेप वाइज दिखते जाते हैं. सो दैट इज व्हाई इट इज अ स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन which is actually giving us a solution. देन हम एल्गोरिदम प्रॉब्लम को बेसिकली ब्रेक करके ही लिखा जाता है, राइट, उसको समझ के एंड ब्रेक करके, ताकि उसे एक प्रॉपर प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सके. Now let's know what are the disadvantages of algorithms. Writing an algorithm takes a long time, so it is time consuming. Branching and looping statements are difficult to show in algorithm. या सो पहली बात तो एल्गोरिदम लिखना सच में डिफिकल्ट होता है. लाइक आई टेल यू वन ऑफ माय एक्सपीरियंसेस. इन वन ऑफ माय प्रैक्टिकल्स आई वाज एबल टू कोड, बट मुझसे एल्गोरिदम नहीं लिखा जा रहा गाइस. आई मीन आई डोंट नो how to say that about it, but yeah, algorithm सच में लिखना डिफिकल्ट होता है. एंड जब आपको कोई फॉर लूप या फिर डू व्हाइल लूप डिफाइन करना होता है, तो आप उसे ऐसे कि फॉर लूप है यहाँ पे फॉर और ब्रैकेट में i इज इक्वल टू 0, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू सम नंबर, देन i प्लस प्लस, ऐसे नहीं लिख सकते एल्गोरिथम में. एक अलग डिफाइन, एक अलग वे होता है उसे डिफाइन करने का, इसीलिए इट्स लिटिल डिफिकल्ट. So let us now know the different approaches to design an algorithm. There are two approaches, top-down approach and bottom-up approach. Okay, so top-down में होता क्या है? A top-down approach starts with identifying major components of system or program, decomposing them into their lower level components and iterating until desired level of module complexity is achieved. In this, we start with the topmost module and increment add modules, that is calls. Okay, तो हम बेसिकली टॉप डाउन में एक मेजर कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर जो प्रोग्राम उसको डिकम्पोज कर रहा है वो, एंड उसको कन्वर्ट करेंगे एक लोअर लेवल कंपोनेंट में, उसे आइट्रेट करके until its desired level of module complexity is achieved. Complexity दो टाइप्स की होता है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. तो बेसिकली उसे अचीव करने तक हम उसे एक्सक्राइब करेंगे, आइट्रेट करेंगे. इन दिस स्टार्ट विद द टॉप मोस्ट मॉड्यूल, यानी कि सबसे ऊपर जो होगा, और उसे इंक्रीमेंटली ऐड करके जाएंगे, दैट इज उसे कॉल करते जाएंगे तब तक वो लोअर लेवल कंपोनेंट पे ना आ जाए. ओके, देन बॉटम अप अप्रोच में उसका बेसिकली उल्टा होता है. अ बॉटम अप अप्रोच स्टार्ट्स विद डिजाइनिंग द मोस्ट बेसिक और primitive component and proceeds to higher level components. Starting from the very bottom, operations that provide layer of abstraction are implemented. बेसिकली जैसे आप एक बिल्डिंग बनाते हो, तो बिल्डिंग के लिए सबसे पहले उसका बेस बनाना होता है, राइट. सो वैसे ही बॉटम अप अप्रोच में उसका बेस पहले फॉर्म करते हैं, एंड देन उसके ऊपर का, लाइक उसके ऊपर 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 कंपोनेंट्स बनाते जाते हैं. Top down में just remember the components are started building from the top to the down, and bottom up में the approaches, I mean sorry, the components are approached from the bottom to the up. Okay, so now let us know how to write an algorithm. Algorithm writing is a process, and it is executed after the problem domain is well defined. All programming languages share basic code constructs like loop, that is do, for, while, and flow control, that is if, else, etc. These common constructs can be used to write an algorithm. So अगर आपको आपका examiner like वाइवा में पूछे what are the types of loops, so you should remember is do, for, while, do while loop. Yeah, and flow controls में if else आता है. काफी लोग confuse होते हैं loops में. They consider if else as a loop, so if else is not a loop, it is a flow control. Okay, so let's just know more about algorithms. We design an algorithm to get solution of a given problem. A problem can be solved in more than one phase. Hence, many solution algorithm can be derived from a given problem. The next step is to analyze those proposed solution algorithm and implement the best suitable solution. So basically मैंने जैसे कहा कि हर एक का थिंकिंग अलग होता है, इसलिए हर कोई एक डिफरेंट एल्गोरिदम डिज़ाइन करता है, लेकिन उसमें से जो सबसे बेस्ट और सूटेबल होता है वही हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, यही लिखा है.
तो बेसिकली यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें प्रॉब्लम दिया हुआ है, जिसके लिए हमने काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स दिए हैं, तो उस चारों में से जो बेस्ट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। Now let us know about algorithm complexity. Suppose X is an algorithm and N is the size of input data. The time and space used by the algorithm X are the two main functions which decide the efficiency of X. जैसे मैंने कहा, two types है, time factor and space factor. Time is measured by counting the number of key operations such as comparisons in the sorting algorithm, and space factor में होता है, space factor is measured by counting the maximum memory space required by the algorithm. The complexity of the algorithm Fn gives the running time and or the storage space required by the algorithm in terms of n as the size of input data. तो बेसिकली टाइम फैक्टर में फॉर एग्जांपल तुम सॉर्टिंग कर रहे हो, तो उसमें सॉर्टिंग में यू आर गोना कंपेयर द एलिमेंट्स, तुम इफ एल्स यूज करोगे या फिर फॉर भी यूज कर सकते हो उस डेटा को इनपुट करने के लिए, आप काफ़ी सारी चीज़ें करोगे, राइट। तो उन वही की जो ऑपरेशंस होंगे वो लूप्स या फिर फ्लो कंट्रोल्स, तो उसको कैलकुलेट करने में जो टाइम लगता है दैट इज टाइम फैक्टर, यानी कि एल्गोरिदम में एक स्पेसिफिक टाइम फैक्टर के अनुसार ही वो टाइम एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा हो तो इट इज़ नॉट वर्थ इट। आपका कोड काफ़ी शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए एंड वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, इसलिए उसको एग्जीक्यूट होने में भी टाइम कम लगना चाहिए। Also, space factor space is measured by counting the maximum memory space. Okay, so memory space एक particular program के लिए एक particular memory space दी जाती है कि उसी space में उसे execute होना चाहिए, या फिर उस अगर ज़्यादा space ले रहा है आपका algorithm, so again it's not worth it. Okay. Now let us know more about space complexity. Space complexity of an algorithm represents the amount of memory space required by the algorithm in its life cycle. The space required by the algorithm is equal to the sum of the following two components. पहला तो it is fixed part, that is space required to store certain data and variables that are independent of the size of the problem. For example, simple variables and constant used, program size, etc. And the variable part is the space required by variables whose size depend on the size of the problem. For example, dynamic memory allocation and recursion space, etc. तो बेसिकली फिक्स पार्ट में क्या होता है कि जो स्पेस होती है लाइक टू स्टोर द डेटा एंड वेरिएबल्स, वो मतलब कैसे इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि तुम कितनी भी स्पेस ले सकते हो, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। बट द वेरिएबल स्पेस में उसकी जो साइज होती है डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द प्रॉब्लम। गॉट इट। ये अगर उसका साइज ऑफ द प्रॉब्लम काफ़ी बड़ा हो तो उसकी स्पेस काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर होगी, इसलिए इट इज़ वेरिएबल। एंड फिक्स्ड में उतना ही जितना डेटा है एंड वेरिएबल्स है उतने ही साइज का मतलब उसके फिक्स्ड पार्ट उतना ही स्पेस लगेगा, और उसकी वो डिपेंड नहीं करता कि आपका प्रॉब्लम कितना बड़ा है, वो डिपेंड करता है उसके डेटा उसके वेरिएबल्स पे, और वेरिएबल में वो ऐसा नहीं होता, उसका उल्टा होता है। ओके, just remember the example, simple variables and constant use and program size, and इसमें होता है dynamic memory allocation and recursion stack space. Here is an example. Following is a simple example that tries to explain the concept. तो यहाँ पे एक simple algorithm लिखा हुआ है to add two numbers a and b. तो उसके लिए step 1 is start, step 2 is c. C एक वेरिएबल है जिधर हम a प्लस बी प्लस 10 का जो सम होगा उसे स्टोर करेंगे, एंड स्टेप 3 इज स्टॉप। ओके, सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हियर वी हैव थ्री वेरिएबल्स a b and c and one constant, hence sp is equals to 1 plus 3, 1 यानी कि 1 constant and 3 are the three variables. Now the space depends on the data types of the given variables and constant types, it will be multiplied accordingly.
So let's go ahead. Here is an example. Int main a is equal to 10, b is equal to 20.5 and character c is equals to a. Int d में it's an array of 10 elements and return 0 हो रहा है क्योंकि हमने int main लिया है. Now let's look at its solution. To calculate the complexity of the algorithm, we need to determine the amount of memory used by each of the variables in this case. So A, which takes up to 4 bytes of memory. Okay. Then B is a float which takes up to 4 bytes of memory. यानी कि ये उतना उसका constant data है integer के लिए, float के लिए, and character which takes up to 1 byte of memory, and array जो 10 integers है उनको which takes up to 40 क्योंकि sorry 10 into 4 करेंगे हम तो 40 बन जाता है. Okay. So the total amount of memory used in the algorithm is 4 plus 4 plus 1 plus 40, that is 40. So it is a simple example of calculating the space complexity. Now it's time to understand the time complexity. Time complexity of an algorithm represents the amount of time required by the algorithm to run to the completion. Time requirements can be defined as the numerical function Tn, where Tn can be measured as the number of steps provided each step consumes constant time. For example, addition of 2 n-bit integers takes n steps. Consequently, the total computational time is Tn c into n, where c is the time taken for addition of 2 bits. ओके इसका एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेंगे हम ताकि इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो मेथड 1 है विच इज पिक अप सम मशीन्स एंड टर्न द टाइमर ऑन, run the operations for different inputs of the data structures you want to compare one by one and see how much time a particular operation will take on the data structure. The one who takes the less time is a better performer. For the better analysis, you can compare the data structure on different machines. तो basically उन्होंने क्या कहा है कि तुम टाइमर ऑन करो मशीन्स का और ऑपरेशंस के लिए उतना टाइम मतलब टाइमर चालू करके कौन सा ऑपरेशन यानी कौन सा एल्गोरिथम बेटर वे में एग्जीक्यूट होता है और जो भी कम टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में दैट इज अ बेटर परफॉर्मर, और जो ज़्यादा टाइम लेता है वो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा परफॉर्मर नहीं है. So here is an example how to calculate time complexity. तो यहाँ पे ये फंक्शन दिया हुआ है 5n square plus 6n plus 12. तो उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे हम. तो 5n square है राइट, तो डिनोमिनेटर में वो जो सारे एलिमेंट्स है उन्हें लेना है 5 plus 6 plus 12, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है और उसके जो न्यूमरेटर में वी नीड टू डिफाइन वन बाय वन द फंक्शंस के जो n के जो पहले के टर्म्स है उन्हें 5, 6, 12. ओके यू कैन सी हियर जैसे ये यहाँ पे वी हैव टेकन दिस n एज 1 यानी कि इधर मल्टीप्लिकेशन में वो 1 स्क्वायर दैट इज 1, लेकिन जब हम इस n की जगह पे 10 लेंगे दैट इज 5 इंटू 10 का स्क्वायर, 6 इंटू 10 का स्क्वायर, तब ये आपके वैल्यूज आएंगे. ओके It is clear observation that the larger the values of n, the squared term consumes 99% of time. Fn is equal to 5n square. This approximate measure of time complexity is called as asymptotic complexity. Asymptotic. Okay, so basically जैसे जैसे n की वैल्यूज बढ़ती जा रही है ये भी बढ़ता जा रहा है, ये कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, लेकिन ये जो टर्म है वो बढ़ रहा है और इस टर्म को कहते हैं asymptotic complexity. Now let us know something more about asymptotic analysis. Asymptotic analysis is input bound, that is there is no input to the algorithm. It is conducted to work in a constant time.
Other than that, input, all other factors are considered constant. A symptotic analysis refers to computing and running time of operations in mathematical units of computation. सो इसमें क्या होता है कि आप जो इनपुट करोगे उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, यानी कि यहाँ पे हमारा इनपुट क्या था, यानी कि बहुत कम था, राइट, इसीलिए वो बढ़ता जा रहा था. So, there's no input to the algorithm. It is conducted to work in a constant time. यानी कि input नहीं होगा, input मान के input ही नहीं होगा, तो other than the input, all factors are considered as constant. तो basically सबको constant हम assume करेंगे. So इसके 3 cases हैं. Best case, minimum time required for program execution. Average case time required for the program एग्जीक्यूशन. वर्स्ट केस यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय.